So maintenance plan, it contains one or more maintenance items. So we'll try to understand what actually the meaning of these maintenance items. And maintenance call date and maintenance object. So we are going to call the maintenance object, whether it might be a maintenance order or whether we can call it as a maintenance notification. So this is the combination of, we can call it as a maintenance plan. And in that maintenance plan, we have three types of maintenance plan. Okay. So basically, the maintenance plan is nothing but a, so when we are going to do our preventive maintenance, right? So here you can see in the Excel sheet, I have prepared one chart to better to understanding. Now, so so here you can see. So what is my maintenance plan? Like first, I'll go to this three types of maintenance plan. Like one is single cycle plan and strategy plan and multiple counter plan. Okay. So single cycle plan is nothing but a single interval. Okay. So whether we are going to generate the maintenance order in a monthly wise or in 1,000 hours, 1,000 kilometers, right? So it is a single interval. Okay. So now here you can see in the Excel sheet. So for example, uh, my motor is there. Okay. My motor. This is my one of my motor, and we can also consider as the equipment. Okay. So in order to do my motor as a maintenance activities, right? So what I will do, I will do on every month wise, right? And what are the activities I will do? I will do operation number one and operation number two, operation number three, operation number four, right? So on, so on, so on. Whenever the system is triggered 1 month, and what is my activities? So those activities also triggered into my maintenance order. Okay, so not only to trigger the maintenance operations, then even though the component is also going to be generated. Okay, CO, MPO, MEMP. Okay, component also. So how the system will be triggered from starting to end. Okay, so we will see the single cycle plan is nothing but a single interval. Whether I am going to schedule my motor as a 1 month, or it might be a 3 month, right? Or it might be a 6 month, or it might be a 1 year. Okay, so these are all my single interval only. I am going to schedule my motor. Okay, so this is nothing but a time interval. And the same thing, we can go into the counter, like if the reading is reaches to 1,000 hours, right, or 3,000 hours, right, and like 6,000 hours, right. So this is nothing but a like in a single cycle maintenance plan with a different category. That is nothing but a counter based the measuring point or counter based the things. Here time interval and this is the counter based interval. That's it. Okay. Now, so how we are going to mapping into the SAP system, right? So that things I'm going to tell it right now. Now, to create the single cycle plan, and before that, in the industry level, if you compare with other the maintenance plan, the 90 percentage we are going to use a single cycle plan. And with the strategy plan, we are going to use the 10 percentage. MCP is nothing but a multiple counter plan, and in the industry level, we are going to use as a 1%. Sometimes they are not going to use this MCP also. The majorly the thing here is single cycle plan or strategy plan. So we will see one by one what actually the single cycle plan, how we are going to create it. Now, to create the single cycle plan, we can use the P code IP01. Okay, and IP01 is the common for all the three types of maintenance plan. Now here you can see here also IP01, here also IP01. So here the difference is IP01 is nothing but it is a single P code to create whether it might be a single cycle plan, strategy plan, or MCP. So in the initial script itself, we need to decide what type of maintenance plans we are going to create. In the initial script itself, we are going to
provide the data. Based on the data, we are going to create our, that might be a single cycle plan, strategic plan, or MCP. So we will see one by one in the SAP system. Or if you want to create a particular single cycle plan, then we can use the T code IP41. Or if you want to create the strategic plan, then we can use the particular T code IP42. For similar for the MCP IP43. And the rest of the things are similar. Like IP02 is a change of single plan. Here also IP02, IP03, and here also IP02, IP03. And the rest of the three transaction code is nothing but a report for the maintenance plan, whether it might be a single cycle plan, strategy plan, or MCP. So both are one and the same over here. IP16, 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 IP24. Okay. So we will see one by one. Here, there are three types of maintenance planning today: single cycle plan, strategic plan, and MCP. Okay. Now, after executing of any of the T code over here, then we will be able to see the three objects. One is maintenance header, a maintenance item, and a task list. Okay. So in the maintenance center, what are the fields we are going to maintain it, and what are the sub-tab will be there, and in the similar, the maintenance items, what are the things which we are going to maintain it. Okay. So we will see directly into the SAP system. Okay. Now I'm going to line to the SAP system to execute our maintenance plan. Okay. Yes. So I will take my equipment, so which have been used from the initial stage only. So that equipment I am going to use over here. Yes, system is loading. Yes. So as I told, so I will execute, I will show you first the T code, okay? And after that, again, I will tell you the single cycle plan, what is in the single cycle plan. Okay? So you are able to see my SAP screen, Bhushan? Yes. So here I have been entered the T code in the user screen. By using this T code, we can create the three types of single cycle plan in a different situation wise. So now here you can see, if you want to create a the strategy, right? So here the maintenance plan category, always we are going to select the standard thing, that is maintenance order. Okay. So then the strategy, if you maintain the strategy, then we are going to create the strategy plan. That is the second one. So if you want to create a single cycle plan, then need not to maintain any strategy or cycle over here. Simple, you can press enter. Now you can see the title bar, single cycle plan. Okay. Or if you want to create the strategy plan, then we can use this maintenance plan category is the common for all the three types, and the strategy is as something time one. Okay. Now you can see the title bar strategy plan. Or else, if you want to create the MCP, then in that case we can make it as a blank, and we can maintain as a something the data over here, and press enter. Now you can see the MCP, that is multiple counter plan. Okay. So by using this T code, we can able to create with three different types of maintenance plan. Or else, if you want to create a particular single cycle plan, then we can use these IP41 T code and press enter. Here you can see single cycle plan. Or else, if you want to create the strategy plan, then you can use the particular transaction code. Okay. So here you can see like that. Okay. Now let us discuss one by one what actually the meaning of single cycle plan. Okay. So here the single cycle plan, it is a very simple maintenance plan. We can create a single cycle plan based on the time and counter. Okay, that is the definition. Now, now what I will do, I will execute the T code IP41. Okay. So this is the initial screen to create the single cycle plan. So the maintenance plan. Here we are not going to maintain any maintenance plan. Always the system will provide the two types of numbering. One is internal numbering, and another one is external numbering. Internal numbering is nothing but system is given by itself.
Okay, that is nothing but an internal numbering, and external numbering is nothing but we are going to provide by manually. So whenever we are going to provide by manually, that it is not an internal numbering, that is just external numbering. So in this moment, I want to take by the internal numbering, which is suggested by the system. So let's see. So now maintenance plan category, yes. So here we have a different options, maintenance plan categories will be there. What type of the maintenance plan category you are going to create, whether you are going to create a notification or maintenance order. Maintenance order is nothing but a preventive maintenance order, okay? Or you can create a calibration plan or maintenance notification. So even though from the maintenance plan we can create our notification, okay? So from the interview point of view, it is a very, very important. So they will ask, simple. So is it possible to create a notification from the maintenance plan? Yes, we can create the notification from the maintenance plan by selecting the maintenance plan category over here. Okay, first let's see, normally 99% we are going to create the maintenance order from the maintenance plan. Okay, so this is the maintenance plan category story, and press enter. Once we press enter, system will take into the main screen level, that is a single cycle plan. Okay, so as I told, what I told, the structure of the single cycle plan, we have found the three objects. One is maintenance plan header, maintenance item, and finally the task list. Okay, so these are the three main objects are structured into the maintenance plan. Okay, so we will see one by one. So maintenance plan, these blank field is there, right? This blank field will be given by the number after click on the save. And here it is a mandatory field. We need to maintain the description. For example, I am going to create a single cycle maintenance plan right on monthly wise. Okay, monthly wise. So now in the maintenance plan header, again we have a three sub tab. One is maintenance plan cycle, maintenance plan scheduling parameters, maintenance plan additional data. So in each tab, again we have a different options will be there. So we will see one by one. Next, in the maintenance plan cycle, there is a field called cycle or unit. How you are going to do the maintenance activity for this equipment? Whether you are going to do the monthly wise or daily wise or quarterly or bi-quarterly, we can mention it over here. So I am going to do the maintenance activities on monthly. So that cycle we are going to maintain it. And unit, right? So monthly, or if you want to do the daily, or if you want to do the yearly, right? So then we can select from the drop-down box. So that SI units are available over here. These are all the standard SI units are available. Okay. So now here we can maintain the cycle text. For example, I am going to maintain the cycle text as a monthly plan, and it is not a mandatory field, so we can maintain by text. And uh, below that, there is a maintenance items will be there. So here, the automatically the maintenance items, the system will be given by this number. So we will see. Now, which equipment we are going to do? So that equipment number, I am going to paste it over here. For example, I will go to another session to open my functional location, that is IP IH01, okay, functional location structure. So what is my equipment? Sorry, functional location 8110, right, Bhushan? 8110, right? Yes. So here I will select the 115. Okay, that is my equipment. And where is that? Oh, it is already gone. Huh? Okay, fine. So I will go IP42 and sorry, IP41. Okay. Yeah. Here I'm going to maintain. And yes, here I'm going to provide the equipment and explain all the things. Okay. Yes. Now come down here. The maintenance item number will be given by the system. So what that number will be getting, we will see after clicking on the save. So now here, so we are mentioning the equipment. So this is my equipment, and automatically the function locations will be fetching. And below the plant is also fetching, work center is also fetching, right? And what the which the order type you are going to
create the maintenance plan, whether you are going to do your preventive maintenance. Okay, so PM03 is nothing but a preventive maintenance. Which order type you are going to do the maintenance activity. So that is the preventive maintenance, right? So always we are going to create the preventive maintenance order. Okay. Now, so below that again the work center, which the work center the people will be doing the maintenance activity. That work center will be fetching over here. And below that there is a task list. So if you are create with respect to equipment task list, then we can choose it over here. Okay. So as of now, let's see whether I have been created my equipment task list or not. How I am going to check? So you can copy this equipment number and I will go into the new session and I will execute the equipment task list T code. What is the T code, Bhushan? /O IA03. Okay, so this is my T code. Let's check it out. Yes, I have been created the equipment task list, right, for this lathe equipment. What are those? So this is my operations, right? So the same thing here also I am going to define. Okay, so here, yes, here how I am going to define. So here you can click on the what extra. Okay, the or click on the extra, click on the task list selection button, and there is a two reference object. Once you select these two reference objects, automatically, like here you can see the group 106, group counter, and the equipment task list. How we are going to identify what is the indicator to identify the equipment task list, Bhushan? To identify the equipment task list, that is A, right? Sorry, not A, E for equipment, right? So that information the automatically fetching over here. Type is E, task list group is 106, and group counter is 1 over here, and description, this lathe machine equipment, these things are available. How? When I click on the extra, click on the task list selection, to reference object, automatically whatever you have been created this equipment task list, right? Automatically will fetching from with respect to field wise. Let's see. Now you can see E is nothing but equipment task list, 106, one group counter, and that description. Okay. And if you want to see the description of this operation, click on the objective list. Now we can able to see the operation over the screen. And what are the component, what are the header we are going to maintain? We can see all those header details over here. Come back one step, come back one step. Now here you can see the task list we are going to link into this maintenance plan. Okay. Now come back in the maintenance plan header under the maintenance plan scheduling parameters. So these things is very, very important in the interview point of view. Okay. So as I told, this maintenance plan, the interview point of view, it's a very, very, very important. Okay. Let's see what are the important fields which are relevant for interview point of view as well as from our in the real time. Okay. Now what I will do, I will take the screenshot again. Yes, yes. So in the maintenance plan schedule parameters, again we have a subscreen. Each subscreen is having a again different field. Okay. So one is date determination, call control parameters, scheduling indicators. Okay. So today I am going to focus on this part. Okay. So in the call control parameters, what is this call origin? And what is the scheduling period, and what is this completion requirement and the startup cycle. Okay, the call origin is always maintained in the percentage. Okay, so basically this call origin is nothing but like so if you want to generate the maintenance order, so if you want to generate the maintenance order in advance, then we can give this call origin as a 90 percentage. If you want to generate the maintenance order in advance, why this maintenance order we need to generate earlier? Because we like for example,
if the maintenance order will be generated tomorrow, for example, 23, okay, then is it possible to do your maintenance activities on tomorrow if the maintenance order will be generated? Is it possible from the maintenance department? Yeah, not possible. Why? Because they want to check all the resources. For example, resources means they need to check the manpower is there or not, or is there any material is required or not, or what are the operations is required or not, or is there any what condition of this equipment, whether it is a normal equipment or critical equipment. If it is a critical equipment, then we need to take the permit. Okay, so tomorrow this maintenance order has been generated and we cannot do the tomorrow itself only. Minimum we need a 3 days buffer or 2 days buffer or 5 days buffer. How we are going to maintain this buffer with the help of the call origin? How the system will call before the 3 days or before the 5 days, we will see. Okay. So in order to check these resources, we need to we need a some gap, right? So from today, from tomorrow, maintenance order has been generated, and tomorrow itself only maintenance order, maintenance activities we need to complete it, then it's very difficult, right? So there is no any gap. To closing and to start our maintenance activity, there is no any gap. Then in the real time, these scenario is very rare, I can say, because we need to generate the maintenance order before 2 days or 3 days. Then only the maintenance people will plan accordingly whether the manpower is there or not, whether the material is there or not, what are the operation we need to perform, and what is the we need any permit or not, right? Everything will be checking by the maintenance department. For that, we need a minimum 3 days gap or 4 days gap or 5 days gap as per the business requirement. Okay. So for that reason, call urgent is the simple way. Like, so if you want to generate a maintenance order in advance, right? Because they need to check the maintenance people resources. So for that reason, we can use the call urgent as a 90 percentage. Okay. So let's see if I'm going to use the 90 percentage urgent, then we will see when the order will be generated. We will see. Okay. So call urgent. Now the scheduling period. So when we are going to schedule this maintenance plan, whether we are going to schedule the 365 days, right, or in a half year, half month, right? So how you are going to schedule, whether you are going to schedule for 1 year or 2 years, right? So that is the scheduling period. Okay. Now startup cycle. So when we are going to start my maintenance plan. So from today onwards, I'm going to start my cycle, or whether you are going to start from tomorrow onwards. So that's the date we are going to maintain it over here. Okay. So let's come back in the SAP system. Let's see. Now here I am going to maintain the call urgent as a 90%. And scheduling, like I'm going to schedule the 365 days. Yes, the start of cycle today onwards or tomorrow onwards, I am going to start my cycle. Okay. So again, it is switch off. Again, I am going to start my cycle. Yes. Oh, yes. Now I will enter again IP41 PM order. Yes. And I will enter the equipment. Here the maintenance item is nothing but which object we have to do the maintenance, right? Whether it might be function location or equipment. Okay. So that things I'm going to maintain. And here I'm going to link with the task to reference object, and automatically the task it is also available over here. And let's come in the maintenance scheduling indicators. In that, I will maintain the 90% in 365 days. Yes, start of cycle.
So I'm going to start from tomorrow or today. For example, you can take today onwards, I'm going to start my cycle. Okay? And click on the save. No. So the next step is here, I did not explain the Excel sheet. Okay, fine. Now, so here we can see the single cycle plan. I'm trying to create it by using the T code IP41. And the next step is, right, what is that next steps? That is, we are going to schedule the maintenance plan. Okay. So to create the single cycle plan, before we have a two steps will be there. We have already done what? We already created the task list, and before that we already created the strategy, right? So here in the strategy, it is not applicable in the single cycle plan. So that is why I cannot create any strategy over here. Even though I have been created the strategy, then that strategy I have been assigned the task list. So we will see what if why the strategy is not applicable in the single cycle plan. So after creation of the task list, what we have done, I have been create the single cycle plan. And after creation of the single cycle plan, what is our next steps? So we are going to schedule the maintenance plan by using the T code IP10. Okay. So I will come back in the notepad. Okay. So here, how I am going to schedule the maintenance plan. Okay. So here we have two methods will be there to schedule the maintenance plan. To schedule the maintenance plan, we can use the T code IP10. Means, so we are going to schedule by individually, right? So for example, so if I have a 10 maintenance plan will be there or 50 maintenance plan will be there. Yes, I can use this T code and I can schedule the maintenance plan one by one, one by one, one by one, one by one. But if you have a hundreds of maintenance plan or 200s of maintenance plan, then it is very difficult to schedule by using the single T code IP10, right? Then in that case, how you can schedule? We can schedule the T code by mass. That is IP30 T code. Okay. So now we will see the IP10. Then after that, in the upcoming session, I will show you how I am going to schedule the maintenance plan by mass. So using the T code IP30. Okay. And go in the yes, this is the 577. My maintenance plan has been created. Okay. Now I will go in the IP02, that is in the change mode. So if you want, you can change it, or if you want, you can add it, anything. Okay. And IP03 is nothing but the display. Okay. So we cannot possible to change anything. Next steps is what I'm going to schedule my maintenance plan by using the T code IP10. Okay. So this is my maintenance plan number. Now you can see, so this is the initial screen. Okay. Yes. So this is the scheduling maintenance plan initial screen. Here we are going to schedule the maintenance plan by passing the number. So this is just now has been created the maintenance plan number. Okay. So pass this maintenance plan 577. Now here you can see the main screen level over here. Okay. So it contains the multiple options will be there. So before starting this button, let's try to explain what are these things again. Okay. So now I'll take the screenshot and I'll explain. And whatever I have been explained, the main field, right? I have been maintained in the notepad and I will give you. Okay. So what are those things? I'll tell you. Now, call number is nothing but the sequence number of the maintenance order. Okay. After clicking on the start button, you already saw that start button, right? So system will generate the call number 1, 2, 3, 4, and so on and so on. The call number is nothing but a sequence number for the maintenance order. And the plan date. Plan date is nothing but in the measurement point I have been explained this plan date. Plan date is nothing but the date on which the maintenance activities we are going to perform. That plan date. Okay. And the call date is nothing but the date on which the maintenance order has been generated. When the maintenance order will be generated, that is the call date. And the completion date is nothing but once we generate the maintenance order and that maintenance order when we are going to close it. So that date are available over here. Okay. So we will see one by one. Now I will click on the start button. Once I click on the start button, this pop-up will become. Okay. So
this date where we are maintaining Bhushan, did you help me where this date has been maintained, startup cycle? Yes, in while creation of the maintenance plan for this 577, I have been maintained the startup cycle, right? So what is the startup cycle? So when we are going to start this maintenance plan, whether you are going to start this cycle today onwards or tomorrow onwards or day after tomorrow onwards, so that date we are going to provide it over here. Okay. So if you want, you can change over here. The system is proposing to us. So if you are going to use the same date, this date which I have been maintained in the 577, or you can change this date. Up to you. Okay. So normally we are not going to change this startup date. So whatever we have been maintained in the 577 startup date, so that date we are going to use it. Yes, I want to use the same date and click on continue. Okay. So now, once I click on the continue, now you're able to see there is a call number as I told. So these are all the sequence of maintenance order number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here you can see the plan date, the date on which when we are going to perform the maintenance activity. And the call date, when we are going to call the maintenance order. On this date, the order has been generated. And the completion date, so far we have not completed this maintenance order, so that date is empty over here. And the new start date, new start hold. Yes, the status of this schedule type is new start hold. Okay. So now here you can see, can you help me how this, the next question is here is how the date is calculated over here. ओके तो प्लान डेट समझ में आ गया ना प्लान डेट इज नथिंग बट तो हम कब मेंटेनेंस एक्टिव करेगा वो वाला डेट है तो कॉल डेट इज नथिंग बट कब वो मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट होगा उसी का डेट है ओके सो उसके बाद ये वाला डेट कैसे कैलकुलेट कर रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहा है वो वाला क्वेश्चन है अभी ओके सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज वी विल सी now. So what we have maintained the parameter in the maintenance plan, Bhushan, what in the 577, okay, I will open one more session, I will show you. अभी डेट के देखेंगे कैसे वो सिस्टम कैलकुलेट किया बोल के ओके हाँ तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं धीरे धीरे जाऊंगा कुछ किधर भी डाउट आए तो पूछ लो तो अभी मैंने स्लैश ओ IP03 में जाऊंगा वो वाला 577 पैरामीटर्स मैंने क्या क्या मेंटेन किया एक मंथ किया है और कॉल एवरेज एज 90% किया है और स्टार्ट ऑफ साइकिल ये वाला किया हूँ ठीक है द सेम द थिंग आई एम गोइंग टू गो एंड मेंटेन इन द स्क्रीनशॉट क्या क्या मेंटेन किया है अभी फिर से मैंने स्क्रीनशॉट ले लूंगा तो यस ये वाला स्क्रीनशॉट ले लूंगा देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा बोल के मैंने बता रहा हूँ फिर से यस हाँ देखो तो अभी पैरामीटर क्या क्या मेंटेन किया एक कॉलर रीजन 90% मेंटेन किया है और स्टार्टअप साइकिल एक आज का मैंने डेट मेंटेन किया हूँ और मेंटेनेंस प्लान साइकिल में मेंटेन क्या किया हूँ 1 मंथ किया हूँ ठीक है अभी देखो ये हाँ हाँ अभी देखो अभी पहले देखेंगे कॉल डेट कब ये वाला कौन सा डेट में कैलकुलेट हो रहा है क्यों ये डेट में आ गया है और ये वाला प्लान हाँ देख करेक्ट है देख कैसे कैलकुलेट हो रहा देखो as a SAP standard procedure so you can note somewhere as a SAP standard procedure 1 month is equal to always a 30 days क्यों SAP standard क्यों किया है 1 month is equal to 30 days is there any reason Bhushan स्टैंडर्ड एसएपी स्टैंडर्ड जर्नल लोग क्या किए हैं एसएपी में 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज किया है क्यों क्या रीजन है हाँ क्या है ना एक एक मंथ में 28 है फरवरी में और 30 भी है और 31 भी है मंथ करेक्ट है ना वो सिस्टम क्या हो जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए एसएपी वाला क्या किया है 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज बना दिया एज एसएपी स्टैंडर्ड वी शुड कंसीडर 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज सिंपल ओके ये पहली पॉइंट है
सेकंड पॉइंट क्या है, ये वाला कैलकुलेशन कैसे हो गया बोल के हम बता रहा हूँ। ये वाला कॉल डेट कैसे हो गया, प्लान डेट कैसे हो गया। देखो अभी 90% ऑफ what 30 days equal to how much, 27 days, correct? So on these 27 days, the what the call date will be generated. Okay, so let's try to calculate it into the calendar level. Let's see. Okay, so आज से स्टार्ट हो गया तो कल से काउंट करो अप टू हाउ मेनी डेज, 27 डेज। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, करेक्ट है? 18 आ गया, 18 तारीख जनवरी में 2026 में आ गया, ये तो कॉल डेट। ओके, तो उसके बाद 21/01/2026 में हम क्या करना है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज करना है। ये कितना दिन गैप है भाई, 21/01/18, नो नो नो, थ्री डेज है ना। देखो तो 30 डेज में कॉल डेट कब हो गया, 27 हो गया, तो 27 माइनस 30, 3 डेज गैप है ना। ठीक है, ये 3 डेज में मेंटेनेंस मेंटेनेंस टीम को प्लान करना है ना, क्या क्या करना है, मैन पावर प्लान करना है, मटेरियल प्लान करना है, ऑपरेशन प्लान करना है, जगह भी प्लान करना है, परमिट भी प्लान करना है। तो सारे काम ये 3 डेज में वो लोग कवर अप कर लेगा। तो कवर अप करने के लिए मिनिमम मिनिमम मेंटेनेंस टीम को 3 डेज गैप देना है। ओके, सो विद इन 2018 से 21 तक 3 डेज है। ओके, सो 3 डेज का अंदर भी काम कर सकता है, नहीं हो गए तो ऑन 21/01 में भी काम कर सकता है बोल के। Okay, so how this the system is going to be calculated? Because of these calculations. One is I have been maintained the maintenance plan cycle as a 1 month and call origin as 90%, and the today the date I have been maintained as the today date. Okay, so 90% of 30 is equal to 27 days में मेरा कॉल डेट कॉल होता है। वो कॉल होने के बाद from on that day to 21/01 I have a gap, so within that gap I will complete my maintenance activities. Okay, ये तो क्लियर है ना। ऐसा सिमिलर सेकंड कॉल नंबर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एवरीथिंग यू विल जस्ट से। ओके, यस, ये तो था। अभी देखो, अभी मैंने क्या करता हूँ, इसका सेव नहीं करूंगा, 577 है। मैंने पूरा एक एक सेंटेंस भी लिखा है नोट पैड में, कॉल नंबर क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, कॉलर जोन मतलब क्या है, पूरा लिखा है। अभी देखो जब तक ये आएगा, इधर क्या क्या लिखा है अभी पॉइंट है, तो देखो कॉल नंबर मतलब डेफिनेशन क्या है, कॉल डेट मतलब क्या है, प्लान डेट मतलब क्या है, ठीक है, शेड्यूलिंग पीरियड मतलब क्या है, कॉल अर्जन मतलब इधर सेंटेंस भी लिखा है और इसका एग्जाम्पल भी लिखा है। ओके, कॉल अर्जन एज ए 90% किया तो कब ये कॉल डेट प्लान डेट आएगा। ओके, तो 1 मंथ इज इक्वल टू एज एससीपी स्टैंडर्ड 30 डेज बोल के मैंने मेंशन किया। 90% ऑफ 30 डेज इज इक्वल 27 डेज। ओके, तो वो कॉल डेट कॉल हो जाएगा। ओके, 3 डेज गैप रहता है किस लिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए, क्यों, वो पूरा प्लान करना है। ओके, तो ये कॉल अर्जन डिफिनेशन है, इट इज यूज्ड इन सिंगल साइकिल प्लान टू कॉल द मेंटेनेंस ऑर्डर इन एडवांस। Why? Because maintenance team get the sufficient time to prepare the maintenance work based on the call engine. Okay, so ये हो गया। नेक्स्ट आई विल कम बैक इन SAP सिस्टम IP10 जो 577 है ना। यस, नाउ अभी देखो, अभी मैंने स्टार्ट करता हूँ। ये पूरा आ गया डेट गिट डाटा, तो समझ में आ गया। तो बाद में मैंने सेव करता हूँ, तो अभी देखो और एक लॉजिक बताएगा। तो ये रियल टाइम में मैंने ये 18/01 आया तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होता है, इधर मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट होता है। कौन सा मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट होता है भूषण, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर। क्यों, इसलिए मतलब हम मेंटेन किया है PM03 एज ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर। ओके, तो
Preventive maintenance order always it will be generated from the maintenance plan. 99% for this preventive maintenance order. Okay, तो कैसे जनरेट होता है देखो, अभी देखो 18 1 तारीख तक मैंने वेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी चाहिए तो अभी इसको रिलीज कर सकता है, कैसे रिलीज कर सकता है वो भी मैं बताएगा। लेकिन रियल टाइम में ये चीज नहीं करना है। टेस्टिंग के लिए आप कर सकता है, टेस्टिंग के लिए दूसरे काम के लिए आप कर सकता है, बट इन द रियल टाइम में स्पेशली इन द प्रोडक्शन टाइम में ये रिलीज नहीं करना है। क्यों? 18 तारीख तक टाइम है ना, क्यों रिलीज करना है अभी? करेक्ट है ना बात? इसलिए वो रिलीज नहीं करना अभी। टेस्टिंग के लिए तो डेमो है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर लो सिस्टम। इधर क्लाइंट नहीं है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने रिलीज करना 18 तारीख तक मैंने, आई डोंट वांट टू वेट अंटिल 18/01/2026। I want to complete my course. Then how I am going to release? Select the line item. Then there is a button called release. Once I release it, then automatically that date will be disappear over here. Okay, and click on the scale. So that will be yes order. Okay, let me see. Yes. So now here you can see वो रिलीज होने के बाद इधर का डेट डिसअपियर हो गया। ये डिसअपियर हो गया ना, वही वाला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर। कैसे देखेगा आप? सेलेक्ट द लाइन आइटम एंड देयर इज अ बटन कॉल्ड डिस्प्ले कॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला क्लिक किया तो आपको देखो टाइटल देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आ गया, तो ऑर्डर नंबर आ गया, तो ऑर्डर टाइप क्या है? PM03। करेक्ट, PM03। ये वाला ऑर्डर जनरेट हो गया। तो मेंटेनेंस पीपल अभी क्या करता है? ये वाला मेंटेनेंस ऑर्डर लेके ये कहाँ इक्विपमेंट है उधर जाके एक्टिविटीज करता है फिजिकली। वो कैसे करता है फिजिकली और एसएपी में कैसे करना है फ्यूचर में पूरा सारे देखेंगे, इंक्लूडिंग ईच टैब एंड इंक्लूडिंग ऑल द फील्ड वाइज। ओके, एज ऑफ नाउ you should need to understand how you can create the preventive maintenance order by from maintenance plan. Okay, so first we need to create the task list, and that task list we can assign it to the single cycle plan, and that single cycle plan we can create by using the T code IP41. And after once we create, then this maintenance plan will be generated. Once we schedule by using the T code IP10, then we will get a final preventive maintenance order. Okay, यही चीज था पूरा। नाउ अभी देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, एक सिनेरियो बताता हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो इफ आई एम गोइंग टू मेंटेन द कॉलर्जन एज ए 100%, okay, I will take over here. Now I want to get from your answer. Okay, the thing, the parameter is the simple, the maintenance plan I have been maintained as 1 month. इधर का मैंने 1 month किया हूँ, instead of 90% 100% मेंटेन किया हूँ। तो rest of the thing is same, 365 days and the start of cycle. Okay, तो अभी हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली सिमिलर, कॉल डेट एंड प्लान डेट एग्जैक्टली सिमिलर। तो इंस्टेड ऑफ 100% मैंने 50% मेंटेन करता हूँ। उसके बाद क्या होता है? कॉल डेट एंड प्लान डेट, हाँ 30 डेज है ना, वो आ जाएगा ना, करेक्ट एग्जैक्टली 15 डेज इधर का 15 डेज उधर का, मतलब 15-15 दिन का गैप रहता है। तो ऐसा ऐसे भी हो सकता है रियल टाइम में, एक एक 15 दिन के लिए भी चाहिए उन लोगों का। क्यों? ये तो स्पेसिफिक रीजन है, बता दो देखो अभी क्या है ना, एक क्रिटिकल इक्विपमेंट है, ये वाला इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट का पार्ट्स एक शाफ्ट है सोचो। ओके, वो शाफ्ट वेरी प्रीसियस कास्ट है वो, ठीक है। वो तो ये तो जो प्लांट है बेंगलुरु में सोचो। ओके, ये वाला शाफ्ट जो कहाँ से आता है, तो दिल्ली में आएगा, नहीं तो कोलकाता में आएगा, किधर भी। ओके, सो ये कोलकाता में दिल्ली में आने के लिए, बेंगलुरु के लिए तो टाइम लगेगा ना। तो it might be like 2 days, right? Then before that, what initially the plant level, what they will do, they will create the PR. PR means what? Purchase liquidation. तो उसके बाद अप्रूव ले लेगा, पीओ क्रिएट करेगा, ठीक है। ये वाला वेंडर को जाएगा, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए मिनिमम 2 डेज लगेगा करके सोचो।
क्यों? वो पूरा चेक करेगा ना, वो शार्प क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, वो पूरे एंकर करेगा विथ रेस्पेक्ट टू योर हायर डिपार्टमेंट। ओके, तो उसके बाद क्या करेगा, ये पीआर पीओ करने के लिए थ्रू मेंटेनेंस ऑर्डर में भी क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे में बताएगा, ये पूरा प्रोसेस करने के लिए मिनिमम 2 डेज होगा। तो 2 डेज वेंडर क्या करेगा, वेंडर कलेक्ट करेगा परचेज ऑर्डर, ये तो कलेक्ट करके वो ज्यादा हो गए तो लगभग लेके 100 क्वांटिटी और 200 क्वांटिटी हो गए तो क्या है, वो लोड में भेजेगा ट्रक में। ओके, ट्रक में भेजेगा। तो कोलकाता से दिल्ली आने के लिए मिनिमम मिनिमम कितना लगेगा, 4-5 दिन लगेगा। ठीक है ना? तो 5 दिन के बाद वो गेट में आके खड़ा होता है, तो सडनली नोबडी विल नॉट सडनली दे विल नॉट अनलोड इट। ओके, सो दे आर गोइंग टू चेक, इट विल बी टेक मिनिमम मिनिमम 1 डे। देखो, इधर का 5 दिन हो गया, इधर का 2 दिन हो गया, कितना हो गया, 5+2+, राइट। एंड ये गाड़ी उधर खड़ा हो गया, उधर गेट का पास, 1 डे होगा, 2 डे होगा। ओके, तो होने के बाद अनलोड हो गया कहाँ, प्लांट लेवल पे। ठीक है, तो ऐसा टाइम लगेगा लगेगा 15 डेज, ऐसे भी हो जाएगा। तो ये वाला चीज गैप रख ये वाला चीज भी गैप रखता है मेंटेनेंस पीपल के लिए। इसलिए कोई भी मटेरियल को वेरी प्रीशियस रहेगा, जो शाफ्ट जो कॉस्टली वाला जो पीसेस रहेगा वो वाला स्टोर में नहीं रखता है। ओके, वो ऐसा वाला चीज क्या करता है वो लोग, ये गैप रख के पीयर क्रिएट करेगा, पीओ क्रिएट करेगा, उसके बाद वेंडर को भेजेगा, वेंडर लोड करेगा, ऐसा आने के लिए मिनिमम मिनिमम 15 डेज करेगा। तो 15 डेज करने के लिए कॉलर्जन कैसे मेंटेन करता है वो लोग, 50% मेंटेन करता है फॉर बफरिंग के लिए। ये कॉलर्जन मेनली दे आर मेंटेनिंग फॉर दिस पर्पज रीजन। ओके, तो इसकी इसी के लिए भी होता है ना। तो अभी कुछ आइडिया आ गया, कुछ कॉलर्जन मतलब। नो, लेट्स कम बैक। So now I will go in the change mode of what maintenance plus slash o IP02. Okay, yes, 577. Yes. तो अभी दूसरा वाला फील्ड देखेंगे, थोड़ा बंद करने के बाद में प्रेजर नहीं करना है, फिर उसमें बहुत सारे फील्ड है इसमें, इसलिए। ओके, अभी देखो, अभी लास्ट वाला बता देता हूँ कौन सा है, कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। उसका मतलब क्या है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फील्ड, IP02। देखो, ये हाँ, और एक चीज अभी देखो, मैंने स्क्रीनशॉट किधर भी निकाल रखा है, हाँ, ये देखो, शेड्यूल करने के पहले थ्री थ्री टैब था, एक मेंटेनेंस प्लान साइकिल, प्लानिंग शेड्यूलिंग पैरामीटर्स, मेंटेनेंस शेड्यूलिंग एडिशनल डाटा। ओके, तो शेड्यूल होने के बाद, सेव होने के बाद और एक एडिशनल टैब आ गया इधर। ओके, वो टैब किधर है, ये देखो, मेंटेनेंस प्लान शेड्यूल का, वो कब आता है, केवल कब आता है, मेंटेनेंस प्लान को शेड्यूल होने के बाद, सेव करने के बाद इधर का एडिशनल मेंटेनेंस प्लान शेड्यूल कॉल आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फील्ड कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। तो उससे पहले इधर स्टार्ट ऑफ साइकिल एक डेट था, याद है कुछ, ये देखो, हाँ, ये स्टार्ट ऑफ साइकिल यहाँ था, इधर भी चला गया, क्यों, क्यों किस लिए, यू आर ऑलरेडी शेड्यूल द मेंटेनेंस प्लान फॉर दैट रीजन, so that start of cycle is not available over here. ओके, तो नेक्स्ट कंप्लीशन रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्लीशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, तब तक प्रीवियस ऑर्डर को तुम कंप्लीट नहीं करेगा तो सिस्टम रिस्ट्रिक्शन करता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू जनरेट द नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑर्डर। दैट इज द मीनिंग ऑफ completion requirement. Again, I will repeat you. So until and unless if you are not going to complete the previous order, the system will never ever generate the next maintenance order. So we will see the test. How? So initially what I will do, I will not activate the checkbox. Let's see whether the next maintenance order will be generated or not in IP10. Let's test it. Okay, you have got my point. अभी मैं क्या किया हूँ, कंप्लीशन रिक्वायरमेंट को चेकबॉक्स एक्टिवेट नहीं किया हूँ। ठीक है, अभी मैंने IP10 में जाएगा तो देखेंगे सेकेंड लाइन का रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे, सेलेक्ट द लाइन आइटम एंड क्लिक ऑन द रिलीज बटन। ओके, तो रिलीज हो रहा है, देखो हो रहा है ना। तो यूजर पूछेगा, यूजर क्या पूछेगा, तो सर जो मैंने
पहले वाला जो ऑर्डर है ना सर, वो मैंने कंप्लीट करना है। तब तक मैंने कंप्लीट नहीं करूंगा, सिस्टम को भी मैंने रुकने के लिए बोल देता हूँ, नेक्स्ट ऑर्डर को जनरेट नहीं करना है, वो बोल के यूजर बताएगा। तो उसी टाइम आप क्या करेगा, IP02 में जाएगा। देखो अभी IP02 में जाने के पहले ही ऑब्जर्व करो, मैंने क्या किया हूँ, सेलेक्ट लाइन आइटम किया, रीच किया, तो रीच हो गया ना, तो सेव होने के बाद फिर सेकंड वाला मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट होगा। क्लियर है ना? क्या बताओ? हाँ हाँ, वो वाला रिस्ट्रिक्शन करना, ये यूजर की रिक्वायरमेंट है। तो कैसे करना, सिंपल, पहले स्टेप IP02 में जाना है, ठीक है, मेंटेनेंस प्लान शेड्यूलिंग पैरामीटर में जाना है, इसके एक्टिवेट करना है, सेव करना है। तो सेकंड स्टेप्स IP10 में जाना है और प्रेस एंटर करना है। तो देखो अभी सेकंड मेंटेनेंस प्लान को, सेकंड लाइन आइटम को रिलीज करने के लिए कोशिश करता हूँ। देखेंगे क्या एरर आ रहा बोल के। So select the line item, release it. Now here you can see what is that error. 21, ये देखो 2101 तुम कब तब तक क्लोज नहीं करेगा, तब तक मैंने नेक्स्ट ऑर्डर को रिलीज नहीं करूंगा बोल के सिस्टम बता रहा है। देखो 1000 बार मैंने रिलीज किया तो वही आ जाएगा, रिलीज नहीं करेगा तो वो वाला डेट भी नहीं जा रहा है, तो ऑर्डर भी नहीं जनरेट हो रहा। ये ऐसा रिस्ट्रिक्शन करने के लिए कंप्लीशन रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो अभी देखो, अभी क्या क्या करेंगे, इंटेंशनली वी विल कंप्लीट द प्रीवियस ऑर्डर। लेट्स सी हाउ। सेलेक्ट द लाइन आइटम, देन देयर इज अ बटन कॉल्ड कंप्लीशन। ओके, काम कर दिया, सब कुछ हो गया। रियल टाइम ऐसा नहीं करना है, तो मैं टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। तो रियल टाइम में कैसे होता है मैं बताएगा फ्यूचर लैब में। यस, तो कंप्लीट किया, जो कंप्लीट किया वाला डेट इधर आ जाएगा। तो अभी मैंने सेव करता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट आई विल गो इन द IP10। यस, अभी बताओ भूषण, so whether now in this moment whether the system is going to be released or not by selecting the line item. Yes, simple. Yes, it is released. We already completed the previous order. Okay, तो यही है, यही होता है इसका पूरा, what different types of fields in the IP03। ओके, सो कॉल ओरिजिन मतलब क्या है, शेड्यूलिंग पीरियड मतलब क्या है, कंप्लीशन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, स्टार्ट ऑफ साइकिल मतलब क्या है, और बैक आ जाओ IP10 में जाओ, कॉल डेट का है, प्लान डेट कब है, कंप्लीशन डेट मतलब क्या है, ये पूरा पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू लेवल। डेफिनेटली दे विल आस्क विथ डिफरेंट सिनारियो। ओके, वो लोग पूछेगा डायरेक्ट। तो देखो भाई, मेंटेनेंस प्लान अभी मैंने रब करता हूँ तो टेस्टिंग करेंगे। यस, देखो मेंटेनेंस प्लान को मैंने 2 मंथ किया हूँ भाई, और कॉल ओरिजिन तो मैंने 90% रखूंगा, शेड्यूल पीरियड 365 रखूंगा, और स्टार्ट ऑफ साइकिल आज से मैंने शेड्यूल करेगा। तो मेरे बताओ प्लान डेट कब होता है और प्लान डेट कॉल डेट कब होता है। ओके, पहले प्लान डेट, उसके बाद कॉल डेट। कॉल डेट का कब होता है भाई बताओ, और प्लान डेट कब होता है वो बताओ, इंटरव्यू में पूछेगा। तो थोड़ा बीच में मतलब माइंड को थोड़ा ये कैलकुलेशन करना है। 2 मंथ के लिए मैंने क्या बताया था, हाँ, 2 मंथ के लिए कितने दिन बताया, SAP आज SAP स्टैंडर्ड प्रोसीजर, हाँ 60 डेज हो गया। ठीक है, देखो 60 डेज इंटू 95%, 90% व्हाट, या 54 हो गया, करेक्ट है। तो 54 डेज में ये कॉल डेट जनरेट होता है। तो देखो, आज के डेट छोड़ दो, कल से डेट पकड़ना है, 23 से अप टू कब, ये चीज। ओके, तो 18 तक ये हो गया। ऐसे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू किया तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 प्लस 7, 47, 47 प्लस 7, 47, 50, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ये देखो, February 14 तारीख को कॉल डेट होता है ऐसे। ओके, तो ऐसा थोड़ा अंदाज से बता दिया तो वो लोग बोलेगा। ओके, तो यही सिनारियो पूछेगा। तो ठीक है, उसका कंप्लीशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या है तो बताना है।
तो प्रीवियस ऑर्डर को कंप्लीट करना तभी नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑर्डर को जनरेट करेगा, वही वाला फंक्शनैलिटी कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। स्टार्टअप साइकिल मतलब क्या है वो बताना है, हम कब उसका मेंटेनेंस प्लान को स्टार्ट करेंगे, ये पूरा सारे मैंने इंडिविजुअली लिखा है। देखो, कंप्लीशन डेट, व्हेन वी आर कंप्लीट द मेंटेनेंस एक्टिविटी, कंप्लीशन